welcome you watching Newsline Live with me, Neha Khanna. Let's get you a roundup of all the big national and international stories that we're tracking at this hour. It's been over a month since Hamas initiated a deadly war against Israel, resulting in the death of at least 1,400 Israelis and the abduction of almost 250 individuals, most of them Israeli. Let's take you through the latest updates on day 33 of the Israel-Hamas war. Israeli forces are now in the center of Gaza City and said to be striking Hamas tunnels. The Israeli defense minister has said neither Hamas nor Israel would control Gaza. Netanyahu is staying firm on his stand that there will not be any ceasefire till hostages are freed. At least 10,300 Palestinians have been killed so far in Israel's counter-offensive against Hamas. Around 70% of Gazans are reported to have fled their homes. Following content may contain visuals that are disturbing, graphic, or sensitive in nature. Viewer discretion is advised. This material is intended for mature audiences and may not be suitable for all viewers. Please exercise caution while watching, and if you find such content distressing, we recommend discontinuing viewing. This disclaimer is provided to ensure awareness and to prioritize viewer well-being. The Israel Defense Forces have lost Sergeant First Class Yaakov Ozeri from the 401st Armored Brigade in a fight against Hamas terrorists in northern Gaza. Ozeri is the 31st Israeli soldier to be killed since Israel launched a ground invasion in response to Hamas's terror attacks on its soil on the 7th of October. IDF paratroopers brigade operating in northern Gaza has uncovered an underground tunnel used by Hamas near an amusement park and another one near a university. Additionally, a weapons warehouse has also been discovered near the university. This warehouse contained chemical materials, RPGs, claymore mines and other ammunition. Israel's Defense Minister Yoav Gallant has confirmed that Israeli forces are operating deep within Gaza City, which is Hamas's stronghold. He's emphasized that Israel has no intention of controlling Gaza once the war is over. Gallant also warned Hezbollah's leader Hassan Nasrallah against attacking Israel, saying it would be a big mistake. Regarding Gaza's future governance, he said neither Hamas nor Israel would govern, leaving other possibilities open. Israel continues to urge Palestinian civilians to move to the south of Gaza for their safety. IDF forces are located in the heart of Gaza City. They came from north and south. They attacked in complete coordination between the ground forces, air and the sea forces. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has indicated that he may be willing to consider pauses in fighting in the Gaza Strip, either for aid or exit of hostages, but once again ruled out a general ceasefire. On Monday, seemed willing to consider pauses in fighting in the Gaza Strip, either for aid or the exit of hostages, but again ruled out a ceasefire for now, despite international pressure. Netanyahu was speaking with ABC News. I know the Biden administration has also said now is not the time for a ceasefire. What they're proposing is a humanitarian pause. There will be no pause? Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out, because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. Blasts and flares lit up the sky over Gaza early Tuesday morning. It's now been more than 1 month since the Hamas raid on southern Israel, when militants killed 1,400 people and seized 240 hostages.
Israel has bombarded the area since then. Gaza health officials say it has killed more than 10,000 Palestinians, including some 4,100 children. UN Secretary General Antonio Guterres warned on Monday that Gaza is becoming a, quote, graveyard for children, calling for an urgent ceasefire. However, both sides have resisted international pressure to do so. Israel says hostages should be released first, while Hamas says it will not free them or stop fighting while Gaza is under assault. On Monday, the White House said U.S. President Joe Biden had discussed, quote, pauses and possible hostage releases in a phone call with Netanyahu, reiterating his support for Israel while emphasizing that it must protect civilians. Like Israel, the U.S. fears Hamas would take advantage of a full ceasefire to regroup. On Monday, Netanyahu was also asked about what happens when the conflict is over. President Biden has said that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza. Who should govern Gaza when this is over? Those who don't want to continue the way of Hamas. It certainly is not. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. International organizations have said hospitals like this one in Gaza City cannot cope with the wounded, and that food and clean water are running out, with aid deliveries nowhere near enough. White House National Security spokesperson John Kirby has confirmed that more Americans are set to leave Gaza. He's emphasized that the United States opposes any Israeli military reoccupation of Gaza in a post-war scenario. Kirby also underlined that despite differences, Israel and the United States remain close allies. As you all saw yesterday, the president spoke with Prime Minister Netanyahu, and he certainly discussed the need to continue to try to accelerate and increase the amount of humanitarian assistance that's going in. He also talked about the importance of pauses in the fighting to allow for aid to get in, people to get out, and for hostages to be released. We'll keep that dialogue going, obviously, with the Prime Minister and his war cabinet. On the idea of people getting out, so we do expect more individuals to depart Gaza today via the Rafah crossing. To date, there's been over 400 U.S. citizens and their families who have been able to depart and have been seeking the assistance of our consular team at the embassy in Cairo. And in just the last 24 hours, about 96, so just under 100 U.S. citizens and family members were able to move across that border. And as I said, it's very fluid. We won't get the final count until the end of the day today, because the day is still going on. But we do expect that there'll be more Americans to come out today. So who is the man leading the Israeli Defense Forces in Gaza? Let's tell you about General Herzi Halevi, the Chief of Staff of the IDF. He's Israel's military head and the commander of both the aerial and ground offensives that are underway against the Hamas. 55-year-old Halevi's family has been staying in Jerusalem for 14 generations. He became an officer at the age of 20 and has experience in combat with the Hezbollah. He's even led the Special Forces unit that conducted secret operations in Arabic countries. He commanded the unit that engaged in a ground offensive in Gaza in 2009. He was appointed the head of the military intelligence in 2014 and chief of staff of the Israeli Defense Forces in January this year, amidst the crisis of judicial reforms in Israel, which had led to nationwide protests. And in other news, satellite images reveal aid trucks lining up at Egypt's Rafah border crossing with Gaza, where severe shortages of food, medicines and fuel persist. Evacuations were halted after an Israeli strike on an ambulance. Egypt is urging increased aid and fuel flow and ensuring ambulance security in Gaza. Images also capture people walking south from Gaza City along Sal al-Din Road and fires burning in the vicinity, indicating the ongoing crisis. The Israeli Defense Forces released a video of some of the weapons found on the Hamas terrorists who had attacked Israel on the 7th of October.
Almost 1,500 hand grenades and explosives, 760 RPGs, more than 400 explosive bells, close to 400 firearms, more than 100 rockets and missiles were recovered. These are just a few of the weapons used to massacre over 1,400 Israelis, most of them civilians. A deadly missile race is taking place in West Asia. Countries no longer have a monopoly on missiles, with armed groups and terror outfits now having access to them. This increases the possibility of war and devastation in the region as these groups aren't held back by any moral or diplomatic boundaries. States, as we said, no longer have a monopoly over missiles, with Iran allegedly supplying these to Hamas, Hezbollah and the Houthis. The Houthis in Yemen fired a ballistic missile towards Israel on the 31st of October. This was intercepted by Israel's Arrow defense system. It was the first space interception as the missile traveled 1,600 kilometers aimed towards Israel. Armed groups now pose a conventional military threat in the region. Historically, West Asia has been a hotbed of missiles in the world, with reports suggesting that 90% of the 5,000 missiles that were used between 1945 and 2017 were used in West Asia. 11 countries in West Asia possess ballistic missiles. Soviet Scud missiles were fired at Israel in 1973, and the Iran-Iraq war saw many Scud missiles being fired. Iran is one of the 57 countries that has smart precision guided bombs. Israel faces a grave threat from armed groups that can use missiles against the country from multiple locations. These armed groups have changed their strategic calculus in West Asia. Israel will need to deal with large proportions of incoming missiles. Israel also needs to step up its defense systems as it continues to fight not just Hamas but also the Houthis in Yemen and Hezbollah in Lebanon. Israel will need to ramp up its electronic warfare and look into ways of finding cheaper ways of interception. Israel needs to increase its reliance on allies in the region. Israel joined the Middle East Air Defense Alliance in 2022 as a step in this very direction. In Jerusalem and Tel Aviv, Israelis marked 1 month since the attacks by Hamas terrorists. They held demonstrations and candlelight visuals in memory of all those who were killed and those who are being held hostage in Gaza. Many protesters in Jerusalem expressed frustration with the Netanyahu government's response to those traumatic events. In Tel Aviv, people lit candles at a makeshift memorial. The police in California have said that they have a suspect in the death of a Jewish man. This man tragically fell and struck his head during an ugly confrontation between pro-Israel and pro-Palestinian protesters. The local community has come together to mourn the loss. Here's a report. As members of a California community gathered on Tuesday to remember a Jewish man who died after an altercation at dueling pro-Israel and Palestinian protests on the weekend, police say they have a suspect. Paul Kessler fell and hit his head, but was still conscious when police arrived at the scene in Thousand Oaks, not far from Los Angeles, on Sunday. That's according to Ventura County Sheriff Jim Freihoff, who said the 69-year-old died hours later in hospital of blunt force head trauma. That makes the case a homicide, but officials stressed it merely means that another person was involved and does not indicate if anything criminal took place. At a news conference, the sheriff said police don't know how Kessler fell yet. These witnesses providing conflicting statements about what the altercation and who the aggressor was. Some of the witnesses were pro-Palestine, while others were pro-Israel. During the investigation at the scene, deputies determined that the altercation with Mr. Kessler
he fell backward and struck his head on the ground. What exactly transpired prior to Mr. Kessler falling backward isn't crystal clear right now. Freihoff declined to name the suspect, who was not under arrest on Tuesday, but said he was one of the people who called 911 and stayed behind to speak with investigators. Officers are calling for videos and photos of the incident to help with the investigation. A local rabbi said he spoke to Kessler's widow, who was in shock. What I know from Paul was that he was a very proud Jew and one who loved Israel very, very much. And unfortunately and tragically, lost his life. May his memory be a blessing for all of us. While a local imam expressed his condolences. That is very tragic, and our community, by the way, offers our deepest condolences and sincere condolences to the Kessler family. Some residents said they're worried about escalating violence. A lot of people last night were like, what is this going to start? It comes as emotions run high in the United States over the Israel-Hamas war, with officials and civil rights groups warning of increased threats against Jewish, Muslim and Arab communities in the U.S. since early October. The Ventura County Sheriff said since Kessler's death, his deputies have increased patrols around synagogues and mosques. The following content may contain visuals that are disturbing, graphic, or sensitive in nature. Viewer discretion is advised. This material is intended for mature audiences and may not be suitable for all viewers. Please exercise caution while watching, and if you find such content distressing, we recommend discontinuing viewing. This disclaimer is provided to ensure awareness and to prioritize viewer well-being. All right, let's now shift our focus to the elections that are taking place in 5 states across India this month. In Chhattisgarh, the Mahadev Betting scam has become a key election issue. Prime Minister Narendra Modi has called it a sign of Congress's corruption and added that the Congress will find it difficult to defend Chief Minister Bhupesh Baghel based on the evidence that's available. Chief Minister Baghel has hit back and asked why the central government is not arresting the main culprits. आपके माता पिता को कांग्रेस ने जो कठिनाइयां दी, जिन मुसीबतों आपके माता पिता को जीना पड़े, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको उन मुसीबतों से जीना पड़े। आपको अच्छी जिंदगी कैसे मिले, दिन रात मेहनत करके मैं आपकी जिंदगी को मुसीबतों से मुक्त कराना चाहता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे नौजवान, आप जरूर सतर्क रहना, क्योंकि ये कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे खेल करते रहते, उनको झूठ करना, झूठ बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस क्षेत्र में कांग्रेस को करीब 60 साल मौका दिया था, 60 साल, फिर भी बुंदेलखंड को कांग्रेस ने सिर्फ सुखा दिया, पलायन दिया। अब भी कांग्रेस के पास वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनके ही कारनामों और करतूतों के कारण एमपी बेहाल था, और जहां मौका मिल भी रहा है वहां कांग्रेस ने कर क्या लिया? छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी है और राजस्थान में काले कारनामों की लाल डायरी है। सट्टा, सरकार मुख्यमंत्री के कमरा और सट्टा, और सट्टेबाज कह रहा है मैंने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। क्या आप मध्य प्रदेश को ऐसा हाल करना चाहते हैं क्या? ऐसी बर्बादी चाहते हैं क्या? कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी। भाइयों, वहां की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटका में भी झूठे वायदों की झड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने वहां चुनावों से पहले वादा किया था कि महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे। माताएं बहनें आज भी इंतजार कर रही हैं कि उनका पैसा कब खाते में आएगा। साथियों, ये कांग्रेस भी जानती है कि एमपी का युवा इनके भ्रष्ट और अक्षम ट्रैक रिकॉर्ड पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ये लोग झूठ का पिटारा लेकर घूम रहे हैं। इन लोगों के रेडियो पर हमेशा एक ही ट्रैक बजता है। 2018 में जो झूठ बांटा था वही नए लिफाफे में लेकर के वो आ गए हैं। ये कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अरे 2018 में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी का वादा करके गए थे। 15 महीना आपको मौका मिला था, किसान इंतजार करते रहे। आपने कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने बरसों तक किसानों को ठगती रही है।
वही डबल इंजन सरकार में हर किसान को 12,000 रुपए की गारंटी मिली है। केंद्र सरकार के साथ साथ एमपी सरकार भी किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया भेज रही है। कांग्रेस का समय होता तो ये पैसा दिल्ली से चलता तो भी किसानों तक नहीं पहुंच पाता। जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसका फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी है, भाजपा कार्यकर्ता उसके यहां पकड़ा गया, और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे, वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख। Congress leader Sachin Pilot has said the party will regain power not just in Rajasthan but also in Madhya Pradesh and Chhattisgarh and oust BRS in Telangana. देखिए, राजस्थान में इस बार परिस्थिति अलग है। हर बार यहाँ बदलाव होता है, लेकिन इस बार जो मैं देख रहा हूँ रिस्पांस जो है लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, वो कांग्रेस के पक्ष में है। और लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकार दोबारा बने। और जो बीजेपी सरकार दिल्ली में भी है, उसका कार्यकाल लोग देख चुके, लगभग 10 साल हो गए। तो विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं केंद्र में भी। और मुझे लगता है कि इस बार न सिर्फ राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हर जगह कांग्रेस पार्टी का शासन बनने जा रहा है। लेकिन वहां तो क्या है, लोग सच में बदलाव चाहते हैं। और कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझाव है, शहर के और ग्रामीण सब जगह। और मैं जिस जिले में महाकौशल वाली बेल्ट में गया था, मैं कल जबलपुर में, तो वहां पर लोग पहले मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को जिताना है। अब देखना है कि हमें कितना बहुमत मिलता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में बहुत लंबा कार्यकाल भाजपा का हो गया। लोग बदलाव चाहते हैं और हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो गारंटीज हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। राजस्थान में हम लोगों ने FIR रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। मतलब हम छुपा नहीं रहे हैं किसी बात को। अगर कुछ दुर्घटना होती है या शोषण कहीं होता है, महिलाओं से अत्याचार होता है, तो उस पर तुरंत एक्शन हम लोग ले रहे हैं। अब बाकी आप मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को तुलना करेंगे तो राज्यों में स्थिति स्टेट गवर्नमेंट का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन राजस्थान में जहां जहां ऐसा हुआ है, तुरंत कार्रवाई हम लोगों ने करी है। कई जगहों पे लोग छुपाते हैं आंकड़े कम दिखाने के लिए, FIR रजिस्टर नहीं होती हैं, पुलिस मामले को दबा देती है। यूपी में कई बार हमने देखा है। लेकिन राजस्थान में सच्चाई सामने आ रही है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। अब फोटो का साइज छोटा है, बड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ राजनीति में लोगों को जनता के बीच में, उनके दिलो दिमाग में भी जगह बनानी चाहिए। और जो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता पब्लिक के माइंड में, उनके दिमाग और दिल में जगह बनाता है, वो परमानेंट है। बाकी पोस्टर तो आज इसके हैं, कल उसके बदलते रहते हैं। लेकिन पब्लिक के साथ जुड़ाव रहे, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहे, एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है, तो वो एक लंबे समय तक रहता है। बाकी पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ रही है, कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी में किसी के साथ कोई मनभेद नहीं है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे। देखो, मुझे तो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने कहा 5-6 महीने पहले कि जो कुछ भी हुआ, जैसे पिछले साल जो हमारी CLP की मीटिंग नहीं हो पाई थी, बगावत एक तरह से हो गई थी, फिर पार्टी ने कुछ एक्शन भी लिया उसके ऊपर, मुझे कहा कि उसको माफ करो, भूलो और आगे बढ़ो। During a public rally in Madhya Pradesh's Samar, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra emphasized women-centric schemes to appeal to female voters. She drew parallels between the BJP's actions and Ahiravan's deception of Lord Ram in how the people of Madhya Pradesh were misled, according to her. हमारी जो घोषणाएं हैं, उसमें मेरी बहनों, आपके लिए हर महीने 1500 रुपए सीधे आपके खाते में डाले जाएंगे।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए होगा। धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए होगा। मेरे किसान भाइयों, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए वो सरकार रही, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन उस समय इन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने का काम शुरू किया था। उस काम को हम पूरा करेंगे। सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ फिर से होगा। 100 यूनिट बिजली बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली बिल आधी मतलब हाफ की जाएगी। पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश में लागू होगी। गैस का जो सिलेंडर है वो आपको 500 रुपए में दिया जाएगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण किया जाएगा। प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं उनको भरने का जल्दी से जल्दी प्रयास होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% आपको जो उसका शुल्क होता है 100% उसमें आपको छूट मिलेगी। आपके परिवारों सहित 25 लाख रुपए तक बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा मिलेगा ताकि आपका इलाज मुफ्त हो सके इस बीमे से। दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गों के लिए जो खाली पड़े बैकलॉग हैं, जो पद खाली हैं और जिनका बैकलॉग पूरा नहीं किया इस सरकार ने, उसको पूरा किया जाएगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना हम कराएंगे। उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, लेकिन 1 से 8वीं कक्षा तक 500 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को और 9 से 10वीं कक्षा तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को और 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह, और ताकि उनको और सुविधा हो और जो पढ़ाई के लिए उनको खरीदना पड़े, जो सब छोटी मोटी चीजें हैं वो कर पाए। देखिए, आपकी जो ये धरती है, रीना जी बता रही थी कि यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर उल्टे हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं? बहनें आप जाती होंगी, जाती हैं? देखिए, रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए, यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया।
और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? Amid speculation about cracks in the India bloc, Congress General Secretary K.C. Venugopal has said it is not a one-party coalition. He said the alliance is trying to resolve all internal differences because they have a broader interest in mind. Listen in. I am seeing all this in a positive way. Ours is not a single party alliance. 27, 28 parties are there in this alliance. Every party has their own views, their own strengths and weaknesses. When an alliance forming, give and take policy from each party is needed. Being a part of it, Congress has to do with that also. We are agreed. I am totally aware of the concerns raised by the India party leaders. What they are telling is reflecting their concern on India alliance. That is a positive note, brother, not a negative note. They are wishing India alliance should be stronger. There should be a clear-cut coordination. These are all things everybody is wishing. Therefore, you are on the same way. You have to understand that whenever 26, 27 parties are joining together, there may be differences also. Sure. In single party also differences are there nowadays. Then you think about 26, 27 parties joining together, there may be differences. We are trying to solve these issues, small issues, through dialogues and meetings. It will happen like that. Why? Because we have a broader interest. Our interest, entire political party had in one point to remove this anti-democratic dictatorship government of India. The way in which this union government is targeting opposition parties, the way in which they are dividing the people of India on communal line, the way in which they are using the entire agencies, ED, CBI, income tax, against the political parties for winning the election. This is quite extraordinary. Therefore, everybody feels that this era of government is to continue, then there will be no democracy in this country. Therefore, it is a high time to join everybody and to fight against these people. This broader interest is there in every political party's mindset. Therefore, we are very sure that this alliance will work very strongly. Small shorter issue will be there either and there. We will take care of all of this issue. We will try to speak dialogues and conversation. Through that, we will solve all this problem. Facing an uproar over his crass remarks on women and population control while speaking in the State Assembly, Bihar Chief Minister Nitish Kumar has now issued a formal apology. He said he was sorry for the statements that he made in the Assembly. Listen in. अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा, और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया, और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हम पे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं,
और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। Nitish Kumar, while addressing the assembly, kicked up a major row after he made a graphic description of how educated women can restrain their husbands during sexual intercourse. He was meaning to highlight the role of women in population control, but the crass comments drew immediate condemnation. Various political parties, including the BJP, termed the comments misogynistic, vulgar and patriarchal. पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। And the National Commission for Women chairperson Rekha Sharma has called these remarks a C-grade movie dialogue and said that a mere apology by the Chief Minister is not enough. Yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. And the worst was, men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So, मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has said Nitish Kumar should withdraw his comments, and in fact he too has demanded an apology from the Bihar Chief Minister. Listen in. नहीं, देखिए, विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है, और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहां पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं
और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं इस बात का, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? भाई आप कुछ भी आप जो भी आप बोलेंगे या प्रोग्राम करेंगे, मकसद तो ये होता ना कि भाई महिलाओं को ताकतवर बनाया जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको समाज में और उनको ताकतवर हो मुकाम मिले, मगर बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने उस चीज को बयान किया है। मैं तो डिमांड करता हूं कि नीतीश कुमार विधानसभा में अपने उस अल्फाज को वापस लें और ये बहुत ही गलत मैसेज बिहार के महिलाओं को, देश के महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया है। Meanwhile, BJP leader Sushil Modi has demanded Nitish Kumar's resignation. देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहां पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीजों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए। China has become the biggest debt collector, according to a recent report that revealed that the country is owed more than $1 trillion through its Belt and Road Initiative. It is estimated that 80% of these loans are supporting countries in financial distress. According to Beijing, over 150 countries have signed up for the Belt and Road Initiative, including Uruguay, Sri Lanka, Switzerland, the Philippines, Pakistan. The BRI was unveiled by President Xi Jinping a decade ago in a vast global infrastructure push, with China distributing huge loans to fund the construction of highways, bridges and ports to low and middle income countries during that period. More than half of these loans have now entered the principal repayment period, according to this research report. Interestingly, the report also says that China has financed over 21,000 projects across 165 countries, and its aid and credit is around $80 billion annually to low and middle income countries. The United States aid to such countries trails at $60 billion a year. European astronomers unveiled the initial images from the newly launched Euclid Space Telescope. It's crafted to uncover the mysteries of dark matter and dark energy, which are believed to constitute a vast 95% of the universe. Here's a report. These are the first images taken from the newly launched Euclid Space Telescope, a telescope that can monitor billions of galaxies up to 10 billion light-years away, and is designed to unlock the secrets of dark matter and dark energy. The European Space Agency says these pictures of a nearby universe 240 million light-years away are the sharpest of their kind. The ESA is leading Euclid's 6-year mission with partner NASA. Here's their Director of Science, Carol Mundell. It's going to survey 36% of the sky, which is the entire extragalactic sky, back to 10 billion years of cosmic history. It's got incredible precision for measuring the shapes of galaxies, so we understand the optics very well. Euclid will now start to piece together a cosmic 3D map, seen here in this animation.
Through it, scientists are hoping to better grasp the formation and distribution of galaxies across the universe, which in turn will help them get new insights into dark matter and dark energy, hidden forces thought to make up 95% of the universe. There's just so much rich science and physics to be extracted from these images. And of course, the colours themselves tell us something about the physics encoded in the light too. So we've got lots of codes to decode as we work through this. Although the mission is designed to last 6 years, ESA hopes Euclid has another 6 months of propellant to keep it in solar orbit some 930,000 miles away from Earth. Well, that's all from me at this moment. If you have been, thanks so much for watching. But do stay tuned to Newsline Live for the latest news updates from around the country and the world. A lot of similarities between Baron Dash and Oliver Kahn. Champions like him are not born every day. And I also like this format that is not only